फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नर्सिंग केयर प्लान, जो कि है मेनिंजाइटिस के ऊपर, यानी कि इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस होंगे। पूरी की पूरी केस प्रेजेंटेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी थी। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं करा, जल्दी से कर लीजिए। इसमें फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोज होगा इनइफेक्टिव सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर एज एविडेंस बाय लेथार्जी एंड ड्राउजीनेस. Hyperthermia related to infection of meninges as evidenced by in vital signs, that is temperature 99.4 degree Fahrenheit. Acute pain related to increased intracranial pressure as evidenced by irritability and pain rating scale, that is 6. Ineffective nutritional status related to poor feeding, vomiting and diarrhea as evidenced by weakness of child. Disturbed sleep sensory perception related to cerebral edema and increased intracranial pressure as evidenced by altered sensorium. Anxiety related to disease condition and hospitalization as evidenced by irritability and crying. Next है risk of injury related to alteration in neurological functions, neurological regulatory functions. Next होएगा disturbed sleeping pattern related to pain and photophobia as evidenced by redness of eyes. फर्स्ट हम डायग्नोज देखेंगे इनइफेक्टिव सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर एज एविडेंस बाय लेथार्जी एंड ड्राउजीनेस. सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट्स मदर सेज दैट ही इज lethargic and inactive. Objective data I observe that the patient intracranial pressure is increased, that is 8 mm of Hg. And goal to maintain the cerebral tissue perfusion. Intervention: assess the general condition and intracranial pressure of the patient to collect the baseline data. Provide oxygen administration to the child by using nasal prong or ambu bag to maintain the level of oxygen. Provide nutritional rich diet to the child, that is breastfeed to maintain the normal nutrition pattern of the child. Administer blood transfusion if prescribed to improve the cerebral tissue perfusion. और इसका evaluation होगा effective cerebral tissue perfusion is maintained. नेक्स्ट है हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन एज एविडेंस बाय चेकिंग वाइटल साइंस. सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट्स मदर सेज दैट ही इज हैविंग फीवर दैट इज 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. ऑब्जेक्टिव आई ऑब्जर्व बाय चेकिंग वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट. गोल होगा टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट. इंटरवेंशन क्या रहेगी? असेस द जनरल कंडीशन एंड वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट टू कलेक्ट द बेसलाइन डाटा. प्रोवाइड कोल्ड स्पंजिंग टू द पेशेंट टू रिड्यूस द टेम्परेचर. प्रोवाइड comfortable position to the environment and position and environment to promote the comfort of the patient. Provide antipyretic drugs as prescribed by physician to reduce the temperature of the patient. Evaluation में हम लिखेंगे temperature of the patient is reduced. Next है acute pain related to increased intracranial pressure as evidenced by irritability and pain rating scale, that is 6. And subjective data patient's mother says that he is irritated and crying continuously. सॉरी, आज थोड़ी प्रॉब्लम है वॉइस में, उसके लिए. एंड ठीक है, गोल आपको पता लग गया. उसके बाद इंटरवेंशन रहेगी असेस द लेवल ऑफ द पेन बाय पेन रेटिंग स्केल टू असेसिंग द लेवल ऑफ द पेन. रैशनल है इसका. प्रोवाइड एनाल्जेसिक्स टू द पेशेंट टू रिड्यूस द पेन. प्रोवाइड काम एंड नॉइज फ्री इन्वायरमेंट टू द पेशेंट टू प्रमोट द comfort. Provide comfortable position and extra pillow to the client to provide comfort and pillow for stiffness of the neck. And evaluation में pain is reduced to some extent. नर्सिंग डायग्नोस नेक्स्ट एक्यूट पेन एक्यूट पेन नहीं होगा. इनइफेक्टिव न्यूट्रिशनल स्टेटस रिलेटेड टू पुअर फीडिंग एंड वॉमिटिंग. डायरिया एज एविडेंस बाय वीकनेस ऑफ द चाइल्ड. सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट मदर सेज दैट चाइल्ड इज वीक एंड हैविंग वॉमिटिंग. ऑब्जेक्टिव आई ऑब्जर्व द पेशेंट इज वीक एंड सफरिंग फ्रॉम पुअर फीडिंग. Goal: normal nutrition pattern will be maintained. And intervention: assess the general condition and weight of the child to collect the baseline data. Next, provide medication to prevent the vomiting and diarrhea. Provide frequent breastfeeding to the baby. Provide rest to the child in calm and dark room. तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी मेनिंजाइटिस के ऊपर नर्सिंग डायग्नोस. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. मिलते हैं अलग वीडियो में. बाय बाय.